Hey folks, what's up guys? How are you? Hello, what's up brother? Welcome back bro. Thanks man. Hello guys. इतने दिन बाद हाँ भाई. I was busy for a while. क्या बात है भाई. लास्ट टाइम जब मैं आया था तब तो मॉडल के बारे में बात हो रही थी. अब स्किल्स. हाँ नाइस. What skill even you use for code review after code written by Claude Opus? I don't use skill. I manually do, and so like I have a framework in which like it goes through a couple of nodes sort of. So I agent with a couple of skills in which one would probably do something like catch nitfixes, one would ideally get logical errors, then there'll be a Karen who will get or who will probably just bitch and not let your PR merge in the first try. So I mean it's custom I guess. Abhi recently there is something called as agent teams, Claude. So you tell Claude ki I want a team of agents to do this particular task. So Claude will automatically like create those agents for you. So read about this if you want. This is a new feature. I don't think it is new. It is relatively older, but this works very well. In this like each sub agent can talk to each other rather than having like one agent and talking to just the main orchestrator one. You can basically like talk to a multiple agent system. I mean, try using this one I guess. बड़े दिनों बाद आया यस ब्रायन. बहुत दिन हो गए यार. I know. In integer you want to create an array. Answer length answer is concatenation of the two number array. What the hell? I'm very much rusty, but we'll start easy. We'll get back. A little rusty though. I use ultra code workflow and it is nice. Just add token उड़ जाते हैं. Let me see भाई. I want to learn whatever you guys tell me. Ultra code. What is this? The ultimate coding interview AI copilot is fine. Okay. Why is it no site found? Claude के अंदर ही. Oh. We'll check it. I'll keep the tab open, I guess.
Give me a while. मैं लिख लेता हूँ मेरी लिस्ट में. I hope it's thank God. Let me write it in my eventual goals. I'll read about it. I need to read our ultra codes. Cool. हेलो तीर्थ भाई, क्या हाल है? पढ़ेंगे यार, डालेंगे इसमें भी. We'll see. कैसे चल रहा है भाई तेरा जॉब? तीर्थ ब्रदर, how is your job going? Nums and I, an answer of I plus n would also be nums of I. What an answer. What are you working on, मतलब? What's your stack and all? हाय गिरी भाई, बहुत दिनों बाद. हैप्पी बर्थडे ब्रो. Okay. I missed the stream by. I was so busy. Okay, you are given an integer groups where group I represents the size of the ith group. You are also given an integer array element. अभी तो गूगल क्लाउड इंट्रोड्यूस हुआ है, सब एजेंट्स वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं. नाइस यार, गूगल क्लाउड. HDFC ना? नाइस. Solve question with explanation which is more help us for sure भाई. Okay. Control Shift N is a new tab, no? New window. Wait, this is a private window. Okay. I'll explain. Motivate me to solve Leetcode. I come on stream भाई, तू भी आजा. साथ में स्ट्रीम करते हैं. Leetcode ग्राइंड छोड़नी नहीं चाहिए भाई. मैंने 1 महीने छोड़ी थी, मेरे को तभी रिग्रेट हो गया. ऐसा छोड़ना नहीं होता. ऐसा ही है भाई, तैयार रहो एकदम. कितना ही टाइम लगता है, 2 क्वेश्चन दिन के करो. हरदम प्रिपेयर्ड. ग्रोथ स्लो है यार. You're given an integer array groups. Group I represent ith elements दिया हुआ है, ठीक है. तो ये group है and elements है. Your task is to assign one element to each group based on the following rules. Index j can be assigned to a group I if I is divisible by j. Okay. There are multiple elements can be assigned. Assign the so small element. Got it. Did you learn DSA pattern wise? हाँ भाई.
Dark mode in Excalibur. Sure. You should take an interview. Sure भाई. न्यू कंपनी बढ़िया है भाई, 1 साल के लिए, उसके बाद देखेंगे. ये जो इंटीजर एरे ग्रुप्स हो गया, ठीक है, असाइन कर सकते हैं तो ये ग्रुप्स है. सो ओके, a little into the explanation. Groups array is this. So let's say you have this group array, you have bunch of elements, you need to assign them to the groups. Elements you'll have like this. These are your elements. 4 can be assigned 8, right? Because 8 is divisible by 4, right? So group I is divisible by element j. You can assign that index j to group I. Now since you can assign both 2 and 4, you need to pick up the less index one. So ideally what you have to do is you pick this 4 up, you assign this 4 to every element which it can divide. Then you pick up 2, and if that particular element is not assigned already, you go and assign it. So basically here. रिवील कब करें? अगली स्विच के बाद. एक स्विच और करूंगा फिर बता दूंगा. आई डोंट वांट एनीवन देयर टू नो. या तो मेरे सब्सक्राइबर इतने कर दो कि फैल ही जाऊं, या फिर बस मेरे को नहीं बताना. लिंक्डइन पर माइक्रो, हाँ वाह. यहाँ रिवील नहीं कर रहा, लिंक्डइन पे चेंज कर दूंगा. वाह भाई, सही है. फिर क्या छुपाना हुआ मेरे भाई. शिट, पता लग गया यार. विशाल मेगामार्ट है, सही बोला. Read my comment. If is anyone help me please in my laptop chat GPT. No भाई, क्या आपको क्या लगता है भाई, हम कौन है? हमें भी नहीं पता भाई क्यों नहीं चल रहा. तो इसमें सिंपल सा ऐसा कर लेते हैं ना, बेसिकली assign element. So we'll keep a map mapping element to index. ठीक है. Second thing what we can do is for each element in group, what we can do is check if group I, whatever element group I is, इसके divisors and if map contains, तो हम assign कर देंगे. कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सो अब इसको, by the way, I learned a new method which I follow now when solving Leetcode. So basically you have certain tools, ChatGPT की तरह I have started thinking. Basically I have certain tools, prefix sum, map, sets, graph, DP. So there are a bunch of tools. What I'll do is I'll think which tool can come up here. So the pattern is pretty standard, like half the times the same sort of tool would work. So the pattern is pretty obvious.
You can somewhat see कि यहाँ पर map लगा के we'll have a benefit of we can easily map the element to index. And then the second thing will be, since this is my hypothesis, I'll try to see if why this would not work. So sort of either proof, or what is the opposite of proof? Reject, I guess. Either prove or reject. So now I'll see कि क्यों नहीं चलेगा. Time complexity क्या होगी इसकी? 10 raised to the power 5 is the length. What? Okay. कितने दिन लगे यार DSA मास्टर करने के लिए? भाई ज़्यादा दिन लगे. I texted you in Instagram for referral, but you said I'll ask a friend. After that you ignored me. भाई मैंने resume भेज दिया. Like you know, I don't work there. अब मेरा दोस्त जो करेगा, that's the most I can do. मैंने भेज दिया, उसको अच्छा लगेगा वो आगे मैनेजर को देगा, नहीं लगेगा तो नहीं देगा. मतलब I connected to you to someone. Also मतलब Instagram पे कई बार नहीं होता है रिप्लाई. ऐसे एक्सपेक्टेशन होल्ड मत कर भाई. मैं खुद नहीं चलाता हूँ Instagram इतना. तो बट भेज दिया था मैंने तेरा. Focus on my video and explain to your subscriber. I think you should come daily with DSA problem. The subscriber will probably increase exponentially. We'll see भाई चिल कैसे करता तू ये बता. कोई गुड वेब सीरीज मूवी. भाई मूवी नहीं देखी यार. हमारी पिक्चर बन जाएगी. क्या प्रूव करना था इसमें? ओके, ग्रुप डिवाइजर निकालना था ना. डिवाइजर कितने होंगे? सो डिवाइजर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ whatever thing you are having. So square root of 10 raised to the power 5 में डिवाइजर निकल जाएगा, because we'll only check till I multiplied by I is less than or equal to the number itself. Till then we'll increase I. And what if a element is 1? That will also. So we'll start from 1 and I. Okay. So for group is 10 raised to the power 5. So 10 raised to the power 5 into square root of this. So this should be 10 raised to the power 7. Probably चलना तो चाहिए. Let's see. And can we ignore some number quickly? को और better कर सकते हैं. Let's try this one. अगर better होगा तो देखते हैं. हाँ भाई, I know. चाय और कोड हितेश, बट उनका क्या. अभी मैं कोड लिख रहा हूँ, उसके बाद आई समझाओ ऑल्सो लिटिल. डोंट वरी अबाउट दैट. Okay, we assign this. So this is basically a lookup index. Lookup. I've worked a lot with database, so I know lookup index. Lookup table या कुछ वैसे बोल लो कि index to I डाल देंगे for int I, and we need a answer as well with answer. So group, is it group or groups? Groups dot size, and I goes to 0. Groups dot size will go till, and then we'll go here. And what we can do is answer of I can be process of groups कर दो. Groups क्यों यार? Groups का ith element. And what else do we need here? We need the map, so empty कर दो. That should be fine. And at the end return answer. Now we need to make this process method. Process method will return int, and the process method will take a int of
not the element, so current element I guess, right? And unordered empty. Alright, we have to use this map to see if there are elements which will divide this current element. That is one thing. प्रेम भाई आगे तो बता, प्रेम भाई आगे बताओ यार. अरे इस प्रोसेस करें अगर हम तो we would probably have to start with I equals to 1, I less than equal to current element, if map of find is there is not equal to mp dot end. So if mp of I if I is in the map and not empty, if current element divided by I modulus I equals to 0, that means I is a divisor current element is having, and if that exists, probably one more check I need yaar. बट 3 चेक तो गलत हो जाएंगे. भाई मैं 2025 पास आउट, अभी जॉब देख रहा हूँ. मैंने मन किया है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा. जॉब नहीं मिली, गिव मी सम एडवाइस. डीएसए स्टार्ट किया था, 100% करके बंद कर दिया. भाई प्रेप बहुत कम है यार. देख मैं शुगर कोट नहीं करूँगा, तू एआई के ज़माने में पीपल आर going crazy with stuff they are building, stuff they are doing. Now learning is like you can learn very easily अब, but भाई जल्दी सीख. If you have done just more than 100 problem तो benchmark बहुत हाई है. लोग भयंकर चीज़ें build कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सीख भी रहे हैं. Can't just have more than 100 problem. तो I had a guy, I liked the guy also. Stream पे आया था, बट ही वॉज सेइंग कि मतलब उसकी भी दिक्कतें थी कुछ, एंड ही वॉज नॉट एबल टू लर्न अ लॉट. बट देन अगेन यू कांट, अभी तेरे को करना पड़ेगा और कोल्ड ईमेल करना पड़ेगा. अमित भाई सही बोल रहा है. और मतलब कोल्ड ईमेल कर ताकि अपॉर्चुनिटीज़ मिले और रेज्यूमे बढ़िया कर भाई. मतलब उसके अलावा कुछ नहीं होगा. इज सैप एनालिस्ट अ गुड स्टार्ट फॉर प्रोफेशन? भाई अगर इंडस्ट्री में घुस जाओ, आगे अपने आप बढ़ जाओगे. गुड बैड कुछ नहीं होता. इट्स अ लॉन्ग रन. पीपल थिंक कि स्टार्ट कहीं से किया है तो आगे मतलब बढ़िया ही होगा. रियलिटी इज टू कंपनी और एन एसेट एंड यू हैव टू कीप ग्रोइंग, कीप चेंजिंग, कीप आई डोंट नो मतलब कीप अप स्केलिंग एवरी वंस इन अ वाइल. अदरवाइज either company will lay you off और आपकी सैलरी ऐसी हो जाएगी कि you would have to anyway shift somewhere else. तो मतलब after a while if somebody is at one place then neither they are learning nor they are like earning उतना. It's different for people at higher up I guess, but इतना मत सोचा करो कि भाई सैप बढ़िया है, कुछ और बढ़िया है. If you are getting paid good enough, तुम्हें लग रहा है कि हाँ बढ़िया है, इनकम गुड भाई, गिव अ पैट ऑन योर बैक. आगे अगली चीज़ के लिए तैयार करो. भैया बिफोर योर जॉब डू सम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
such as web development somewhere. I had question about that. Before your job, you do some development project. I am building something, but I am not building that on stream. Suggest a good way, if exists, to ask for referral. What things to keep in mind so I won't irritate the other guy. You can't ever know that. It's same as saying what to do. मतलब you can't possibly know what other person has an impression of what a ideal like cold email should be. Just do your thing, whatever you think is right. Well, what happens with me is when I write a long paragraph, not long, like 3-4 lines saying ki hi, I need referral because I find myself a good fit, blah blah blah. Then someone or other would say कि भाई why are you writing so much? सिंपल बोल दे कि भाई रेफरल चाहिए एंड गिव मी द लिंक आई विल गिव. और कभी अगर मैं सिर्फ ये बोल के मांगता हूँ तो कोई ना कोई बोलता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज दिस, यू डोंट नो हाउ टू आस्क फॉर अ रेफरल, ब्ला ब्ला ब्ला. तो भाई मतलब जो तेरा दिल बढ़िया बोले वो कर. बंदे अलग अलग तरह के हैं. दे विल एनीवेज गिव यू. you'll never possibly be able to impress everybody, I guess. So if I can find this I in the map, I'll store map of I in there, or else yeah. But see, the thing about divisor is a divisor has to be multiplied with something to make the current answer. So if I is, let's say 1 multiplied by current element is equal to current element. So we'll need to have another also. But what if it is a perfect square of something? So we'll do if I is not equal to current element divided by I, and mp dot find of current element by I is not equal to mp dot end. And what else do I need to check? Do I need to check anything else? अब main check तो रह गया यार. If current element modulus I equals to 0, so current answer equals to minimum of current answer by mp of current element divided by I. Return current answer. I think this should be good. भैया बिफोर योर जॉब क्या बोलते हैं? माई बैड. एक मिनट अभी आ रहा हूँ बस. अदरवाइज व्हाट शुड आई डू? क्या सीखूँ? बहुत परेशान हूँ. फैमिली प्रेशर है बहुत ज़्यादा. घर वाले घर बुला रहे हैं तो वो हार्डवर्क मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ. भाई कहीं से भी शुरू कर दे यार. ये ऐसे नहीं होता भाई. क्या सीखूं इज़ वेरी वो भाई. इट्स अ क्या सीखूं इज़ अ लूप होल भाई. ज़िंदगी भर सोचता रह जाएगा क्या पढूं क्या सीखूं. कहीं से भी स्टार्ट कर दे. 1 महीने बाद वो चीज़ तू सीख चुका होगा. तो कुछ नहीं तो कुछ तो तेरे पास होगा ही. नो नॉलेज गोज़ टू वेस्ट. सिंपल सी बात है. ज़्यादा मत सोच कि क्या सीखूं क्या नहीं सीखूं. अपना जो मिल रहा है सीख जा. और बेसिक गाइडेंस चाहिए तो आस्क चैट जीपीटी व्हाट इज आई दिस इज माय गोल, टेल मी व्हाट ऑल डू आई नीड टू लर्न. जो वो बताए सीख ले. और कोल्ड ईमेल करता रहे. तेरा रेज्यूमे धीरे धीरे साइड में बढ़ता रहेगा.
तू अप्लाई भी करता रहेगा, इवेंचुअली दोनों पाथ ग्रो होते रहेंगे, कभी ना कभी तो कन्वर्ज हो ही जाएगा. मतलब मेक श्योर कि जब तेरे को इंटरव्यू मिले देन यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, प्लस यू हैव गुड इनफ रेज्यूमे, अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट मतलब धीरे धीरे एक एक करके चेक पॉइंट कर. इस चीज़ में अटका रहेगा कि व्हाट टू डू, क्या जो मैं करूँगा उससे 100% आउटपुट निकलेगा कि नहीं, तो भाई लगा ही रहेगा एकदम. आर यू गेटिंग अ फर्स्ट जॉब ऑन कैंपस? ऑन कैंपस. गॉट 2 रेफरल्स. हायरिंग इज शिट भाई हर जगह. इवन इफ यू गेट रेफरल देयर इज नो वो श्योरिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड. दैट्स द रियलिटी. तो मीन आई डोंट नो व्हाट टू टेल. Leetcode and real hands-on experience in a company में क्या ऐसा difference है? Cause I don't think they'll be asking to reverse a linked list. They won't be asking, but your logic building is improved with Leetcode, which works there. So see this here. When I said कि it is a lookup index, somewhat similar works in SQL as well. You build a lookup index. अब obviously your mind won't be able to tell you that okay I did this in map, that's why I'm able to understand it a little faster. But I am pretty sure कि because I've done Leetcode and I know कि okay this is how logic is built, this is how we can keep in maps so that we can use it, so that helps in other process as well. और अगर एक ढंग की कंपनी में जाओगे तो they won't be asking you to build just CRUD APIs. They'll be asking you to optimize something कि भाई हमारा database is doing 10 million queries in a day. How can we make a parallel system? तो उसके अंदर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई LLD कैसे बनाए, कि अगर multiple processes चल रहे हैं, जैसे कि if this is the case कि भाई तुम्हारा एक database यहाँ पड़ा है, this is your DB and this has like 10 million concurrent requests. Now you won't have one server, you will have 3 server, let's say. Now if you want to do parallel executions or like you have to write parallelly, how do you make sure that when this DB goes here writes and when this DB goes here and reads, so this is read, arrow से समझ जाना, this is write. So how do you make sure that when this writes and this reads the operation is atomic? How do you see a lot of things कि मतलब ये राइट कर रहा है मान लो, एंड व्हाट इफ राइट करने से पहले इसने कुछ इवेलुएट किया एंड ये राइट करने जा ही रहा था एंड दिस कनेक्शन ब्रोक, तो तुम उसको कैसे मेंटेन करोगे? और अगर मतलब इफ देयर इज सम ऑर्डरिंग दैट नीड्स टू बी मेंटेन इन द DB, तो हाउ वुड यू इंश्योर कि एक पर्टिकुलर लेट्स से कुछ तुम्हारा टेबल है उसमें प्रोसेसिंग एक सर्वर बस एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों की कर सकता है. लेट्स से मान लो अगर तुम्हारा कुछ क्या बोलूँ मैं, शॉप आईडी है लेट्स से, ठीक है, हाउ डू यू मेक श्योर कि ये शॉप आईडी के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो तुम्हारा सिर्फ यही वाला सर्वर करे, ये ना करे? तो उसमें हैशिंग लगती है कि भाई तुम सर्वर किसी तरह से ये पता लगा लो कि ओके सर्वर इंडेक्स क्या है, और अगर शॉप आईडी मॉडुलस सर्वर इंडेक्स, तो उस हिसाब से तुम ऑप्टिमाइज कर सकते हो. तो मतलब कॉन्सेप्ट्स रीयूज़ होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी रीयूज़ नहीं होता. ऑब्वियसली हाँ, तुमसे तुम्हारा क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा, बट अब इस तुम ग्रुप को चेंज कर दो और कुछ और बना दो, सर्वर्स बना दो और इस एलिमेंट को डेटाबेस रो बना दो, तो हाँ मतलब आ सकता है भाई. इट्स नॉट कि नहीं आएगा कभी भी. This is less than right. I1 से स्टार्ट किया. क्या क्या क्वेश्चन आए हैं? I am entering in second year of college. I don't know. Maybe I sound silly, but doesn't matter if I ask. भाई तूने खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट किया, खुद को खुद ही सांत्वना भी दे दी यार. ये क्या बात हुई? नथिंग गोज टू वेस्ट भाई कभी भी. अगर तूने कभी कोई हिस्ट्री का चैप्टर भी पढ़ा है ना ढंग से, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. कभी ना कभी देख लेना, पक्का काम आएगा.
That's the biggest learning I've ever learned. No knowledge goes to waste. How do you build projects? Confidence नहीं आ रहा. पहली बात तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए. चैट जीपीटी करो बंद. एक कोई भी प्रोजेक्ट उठाओ, उसको बिल्ड करो डॉक्यूमेंटेशन से. फिर दूसरा प्रोजेक्ट कोई भी, इट कैन बी एज सिंपल, यू कैन स्टार्ट एज सिंपल एज नोट मेकिंग ऐप. जब लोग बोलते हैं ना कि स्क्रैच से बनाना इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट. आ गया होगा भाई क्लाउड चैट जीपीटीज, दे कैन डू स्टफ फॉर यू. करना यूज़ कंपनी में, नोबडी इज़ डिनाइंग. बढ़िया सिस्टम बनाना अपने, बट द प्रिमिटिव डीबगिंग एंड द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड, कि कभी क्लाउड फट रहा है या फिर क्लाउड ने कोई एरर दे रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, those only come when you have developer experience. And I have personally felt that if I stop designing for a while, I don't get my thoughts essay, snappy thoughts ख़त्म हो जाते हैं. फिर you only rely on chat gpt. तो if you are in second year and if people are telling you कि भाई कोड उससे करा, बस सिस्टम डिज़ाइन पढ़, नहीं भाई कोड कर, तेरा दिमाग थोड़ा स्नैपी बनेगा, बढ़िया रहेगा. मैं भी अभी आके यूट्यूब वगैरह पे बनाया करूँगा प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू लूज दैट स्पार्क. उसमें दिक्कत होती है. फाइंड करूँ या काउंट करूँ यार? फाइंड कहीं कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं हटा रहा यार. इफ़ काउंट आई इज़ नॉट इक्वल टू एन, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए. काउंट करके देखता हूँ, ग्रेटर देन ज़ीरो. एंड किसी एक की कॉम्प्लेक्सिटी गलत घटिया होती है. अब आई डोंट नो दोनों में से कौन सा है वो. एक दोनों में से घटिया होता है यार. अगर ये चल गया तो इस दूसरे वाले की घटिया होती है. इज ग्रेटर देन ज़ीरो. वेट, लेट मी जस्ट ऐड दिस. I did ask for referral. After referral I applied and no reply, just closed. That happens. यहाँ पे भी तो चल गया भाई. Good suggestion. Yeah, good suggestion. Internal implementation is different दोनों की. इस तो और पहले फट गया भाई. नहीं भाई, और पहले फट गया यार. ये तो कहाँ जाना है दूसरा. क्या दिक्कत है यार, कहीं तो कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेक हो रही है यार. How's the job market for you guys which have good year of experience and good company name on the resume? Company name I think काफ़ी लोगों के पास आ गया है.
There's no it factor. It's all about how many people do you know, who can refer you, who can give your resume personally to the manager and say, okay, I know this guy, give him job. That's what works now, bhai. I'll keep it for a while यार. मैं stream के बाद करके देखता हूँ, इसको रोकता हूँ. I'll try it after the stream. I'll move to the next one. एक दो test case for try. I'll try to fix it. मन नहीं मानेगा ना, लेकिन इसमें भी भेजा है यार, क्या दिक्कत है. I into I should be less than equal भी ठीक है यार, क्या दिक्कत है. पता नहीं, देखता हूँ. Can't figure out the error. है. ChatGPT नहीं भाई, खुद ही figure out कर लूँगा बाद में. I think stream should be a little spontaneous, तो मैं skip कर रहा हूँ. But other than that is fine. ढूंढ लूँगा. Stream के वन लाइनर होगा इसका कुछ आंसर. एनीबडी हु कैन टेल मी वन लाइनर आंसर ऑफ दिस. मैं फोन नहीं लाया यार. हाँ, वन लाइनर इसका बनेगा. काउंट करना पड़ेगा ना नंबर ऑफ वर्ड्स. सबसे इजी I think ON one time without count or something. ERPCRM, what the hell is this? Oh, ये कहाँ कर रहे हो भाई? हाँ, this is not required. You are right. Second is not required. Given an integer num, you can swap two digits at most once to get maximum valued number. Return the maximum number you can get. Okay. Someone at our college doing a startup. Nice, man. String number. I think this is pretty simple if you think about it. तुम्हें एक number दिया है. This will have a lot of implementation to do. Basically, you are given this number. पहले तो integer है तो string में will convert it.
then possibly the largest number after this which you can convert. What that means is, let's say there exists a number which is greater than this here. एक मिनट यार. ओके, एक सिंपल सी चीज़ हम कर सकते हैं इसमें. ठीक है, लेट मी इम्प्लीमेंटेशन एन टू सिंपल और एग्जैक्टली एन नहीं, O1 में भी हो सकता है. O1 नहीं, सॉरी, ON में हो जाएगा. बेसिकली तुम इसमें क्या कर लो, आइडली ये करना है तुम्हें कि जो मैक्सिमम नंबर्स हैं, मैक्सिमम डिजिट है, दैट शुड बी एट द फर्स्ट. सो बेसिकली इफ दिस इज हियर, 7 should be at the first to make largest number. ठीक है. If 7 is not at the first, so this is the best case scenario in which 7 is not at the first, so you can just swap 2 with 7. Okay. What if the number is something like 7 2 3 6? Now this is another case, right? What would you do in this case? In this case, 7 is here, is done, but the largest number that we can form using this would be 7 6 3 2. So ideally for the next largest number, this digit 6 should have been here, but it is not. So ideally we can swap 2 with 6. So either we can keep the largest, we can form the largest number and keep it as a reference until the point the digit or the index is same of 6 and, so basically till the index these two match. So here first they would match, this would match, so we would ignore this. This won't match, so we know, okay, 2 is the one that we need to swap and 6 is the digit that we need to swap it with. Now we'll find the index of 6 which is to the rightmost, I think. To the rightmost. So if there is another 6 that is coming, so we ideally want to have the index of this 6 in the original string. So one thing that we can do is keep a map of index, and not just index, index of the last occurrence of that particular digit. Now digit can only be from 0 to 9, so we can just keep a reference of 0 to 9 in this, and we can compare. And let's say here we saw 6 here, but here it was 2, so we can go back and check, okay, what is the index of last index of 6, the last occurrence index of 6. So this would be here. We will ideally swap this here and this here, and then we'll convert it, because we can only swap once. Okay, this sounds good. समझ आया? Then it's not ON as you said, it would be n log n to be precise. Let me think about that. Complexity I didn't think. So we'll have to fill in the map and we'll have to compare. No, how exactly would it be n log n? I don't think it will be n log n, brother. I think it will be O of n, because you are just doing linear comparison. In the current time there, yeah, I'll use unordered map. Why won't I? I just want one, I want the index of the last occurrence. In the current time there is a thing going on that instead of doing DSA topic wise, do it pattern wise. Will it be good way of doing it? What do you say? It's not a current time, it has been there for almost all the time. I mean, if you're learning, then it's better to do it topic wise first, so that you know the concept. So answering your question, DSA is basically data structure first and then combining it with algorithms. So if you are learning data structures, it is better to go topic wise.
algorithms could be mismatch of two different data structures. So if you are not going topic wise in the algorithms or in the patterns as such, if you will see, okay, there's a pattern coming in to solve a question which requires linked list plus also trees. But if you are not done tree, in that case you'll be screwed because you can't practice that pattern. So I mean, data structure, do it topic wise, but once you have done this topic wise, you have all the tools, I guess, like all the data structures, you know a little bit about trees. Then when the complex pattern sort of problem will come, you'll know at least what you are applying and why you are applying. So I guess from data structure point of view, just try to do the data structure topic wise and then patterns differently. It's like that. When I'm gonna say I brought it even when I hit my 40s like a fucking alcoholic with a bottle full of malt liquor, but I couldn't bottle this shit any longer. The fact that I know that I'm gonna hit my bottom if I don't pull myself from the jaws of defeat and rise to my feet. I don't see why y'all even started with me. I get it beast, my enemies die. I don't see spot to the deep, all of the seats. I'm east side, middle beat. Your opinion on ASP.NET, it's shit. I mean, it is usable, but not a lot of people are using it.
like the first time I bought a chain. This is like when I was saying before the fame. Oh, this life is crazy. This is like another thing I can't explain. This is like a summer flame that got away. Oh, at another age you go to waste. Oh, this life is crazy. Sort is O, and yeah, I didn't consider sort. Yeah, now it is all again. But you weren't correct as well. You gave the reasoning for a different reason. Can you provide referrals or internal? I can send a friend then. Like I have friends in Microsoft, so I can send them. I personally can't. So how did you come up with this approach? So I just observed that the largest number, if we compare the largest number that we can form and the number we have right now, so let's say this number comes, so this is the best case scenario in which the first index is not matching the last. So basically what I did was I compared the largest number that we can form versus the current number we are having. Ideally it is a greedy sort of algorithm, so we need to like swap the number whichever is mismatching. So here the first number only is mismatching, so we need to swap these two so we can form the next largest number in just one swap. If the number was this, in that case we would have this as common. So then we start again from here. If these two are mismatching, the next best thing that we can do is swap this 2 with the next largest number present in the string, which is like 6 here. So we swap this, and so for this we would need the last index of any element in here. So just capture that in this one. We check what we want and what we have, right? Sort of like get tools in your head. You're coming after so long time. Yeah man, got busy. My friend was saying do it pattern wise, but said no, as topic wise build concept and you can proceed pattern wise, pattern alongside. You'll have to do both यार वैसे, मतलब you have, let's say you have 10 different chapters, you have to learn them. So if you want to get better in them, so it does not matter if you do a mixed set of questions or not, but you will have to learn all of that. I'm just saying कि देख लो यार, it's up to you. Eventually you'll have to do it a lot. Like, I mean, you'll have to learn it all the way. Bro, when MS hire freshers, it hires a lot apparently. You're just not applying in the right teams, I guess. Also in right team also, yaar, it you can never know yaar, क्या बताऊँ मैं, मतलब you need someone internally to help you out with that. There are a lot of things to it. Drop your playlist.
I think I dropped it a while ago. I applied 50 plus but not shortlisted. I guess internally you'll need people to vouch for you. Given zero indexed array nums consisting of positive integers, you can do the following operation on the array any number of times. Choose an index I such that okay. In this question also, like if I see from this example, it is always better to keep the right one greater. So if we start from the very right and if we see that okay, this element up here, this one can never be paired with anyone else, because the element to the left will always be bigger. The reason being that you'll always add something to this element, you are never subtracting. So this will always remain till the end, right? Now 9 can go up till a point, and what we need to find, return the largest element that you can obtain in the array. Yeah, so we can keep adding 9 up till the end, and that will be the largest. Now let's take another case in which it is 2, 3, 7, and actually let me do 9, 8, 7, 9 and 3. So this 3 goes away. Now either we can keep on increasing this one, and this 3 would be able to increase here. What if here it was, it will be 7, 9, 16 and 3, 19. What if it was 28 up here? What in that case? So these can increase but never get paired with this one. But it won't matter because this is anyways greater than all of these. So the largest element that you can form would be after this. Yeah. This is an easy one also. So what you have to do is basically take the element from the right, keep on adding till you can add. If you can't add, move one level down, make the answer equal to this particular thing, whatever the element is. Again start adding until you can add. Okay.
start the song. Okay, before we solve this question, what's up, guys? Tell me something new going on. I've heard that the Apple prices have increased. Where can I send? Put it in a drive link and send it on Instagram, by. Instagram would be in description of channel. Is it true internally that AI usage Claude is banned now in Microsoft? I don't think Claude is banned. It's just the Claude Code app is banned. So there are two sort of Claudes, right? One is like this. Is my Olama learning? Okay. So one is this wala Claude. This Claude Code is, I think, no longer used there. The other one is still being used. Today POTD, probably bhai, this is the last question. We'll see. So people are giving 1k to Claude API instead of Claude Code 200 plan. No clue why. I use it for free. I have GPU, so I can use it for free. I don't need that. इसको Anyone know why Apple price increased? RAM prices probably. I have this Mac Mini. I was trying to sell it a year ago. People were okay buying it for, like, I bought it for 80k. People were okay buying it for 50k. Now I'll sell it for 90k. Life is funny. I'll look over POTDY, but I am not promising anything. I'll probably leave. This was trial stream, so find the maximum number of element in the subset. You are given an array of positive integers. Now you need to select a subset. Now which satisfies the following condition. The power of, for example, 2 4 16 4 2.
What is the maximum number of element in a subset that satisfies this condition? Okay, so what we can do here? Okay, if we take this element, which is probably a bad test case, so इसके अंदर what you can do is can you make in-depth video on Instagram system? I think I have it on my channel, no? It is not okay. ठीक है. We probably make. आप लेंगे नोड नंबर एलिमेंट होगा फॉर द पैटर्न, इतना मैं समझा, बट हाउ टू लॉन्गेस्ट कैसे ढूंढूं, तो वही तो बात है. एक बार 3 का लेके देखना, अगर 3 का हम करें तो पैटर्न क्या होगा, 3 होगा एंड 3 1 का डबल 9 होगा एंड 9 होना चाहिए फिर. क्योंकि दोनों दो साइड होंगे राइट, 9 एंड देन 4 टाइम्स, सो 27 एंड 81 होगा, यही होगा राइट. वी नीड द काउंट ऑफ एलिमेंट 2 बार, जैसे कि ये हुआ 2 2 बार आया. अगर अगला एलिमेंट 4 के बाद एक और एलिमेंट चाहिए होता विच वुड बी, क्योंकि हम 2 की बार ले रहे हैं 16, तो 4 भी 2 बार आना चाहिए था राइट. You feel so easy. तो 4 will be 2 की पावर 2 and ठीक है. तो why don't we separate into list, एक जिसके अंदर the count is 1, खैर 2 भी हो सकता है यार उसमें काउंट, बट 1 वाला लेते हैं, लेट्स से 1 वाला लेते हैं एंड 1 वालों के देख लेते हैं कि जितना डिवाइड करने पे आ रहा है, which is like 4, तो इसका हाफ का जैसे 9 आया. इफ लेट्स से 9 का काउंट एक बार होता है, सो वील चेक इफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 का काउंट कितना है, एंड इफ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये हो सकता है. फिर वट एवर नंबर कम्स वी कैन चेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, एंड इफ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो वो भी हम सेट में डाल सकते हैं, बट देन दिस शुड बी अ चेन.
Now what would be the complexity of that particular chain? Given that 10 raised to the power 5 है, हम उसको दो लिस्ट में डाल पाएंगे, but then for every number we'll have to go, if number is 10 raised to the power 6, so we'll have to go it, और number of length ये number कितना है, 10 raised to power 9 तक है. Okay, 10 raised to power 10 raised to power probably 4 and then 10 raised to the power 2. बड़े नंबर का भी इट विल बी फाइन, इस इतना कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी. If it is a big number we need to make a square root वैसे ही कम होगा, क्योंकि 81 के बाद multiply 81 by 81 it's already huge, can't have a big chain. तो हम probably हर एलिमेंट की चेन तो चेक कर सकते हैं and it will be already null, बट अगर दो से ज़्यादा भी होते हैं तो पेयर हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो गए. That should be fine. As power go pretty fast, huh? Let's go. We can check for all element is starting number. क्या लिख रहे हो यार, मैंने देखा नहीं. पहले मैप लो एंड स्टोर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल, उसमें फिर जिनकी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर फाइंड अ पीक एलिमेंट. बस जो 1 है उसको अकेले देखना पड़ेगा आई गेस. Which language is mostly used in Microsoft? C Sharp, Python? I don't know, man. I'm too into this. ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत हो गई? अगर हम काउंट स्टोर करके रख लेंगे ठीक है, मतलब आ गया. तो लेट्स मेक अ अनऑर्डर्ड मैप. स्टार्ट द म्यूजिक. लॉन्ग कीप अ काउंट मैप. एक नम और नम्स ले लेते हैं, नम प्लस प्लस करते रहते हैं. ठीक है. पीक एलिमेंट हमें एक चाहिए होगा क्या? के एक है, राइट? सो वी कैन हैव वन.
Best is fix every number as starting of the chain and check by it will give O(n square. O(n square चलेगा भाई? O(n square नहीं होगा ना यार, log है. हाँ नहीं चलेगा बट log है, वो O(n square तक जाएगा नहीं भाई. 4 या 5 में तो तुम्हारा नंबर यहाँ पहुँच जाता है ना यार. अगर तू स्टार्टिंग 2 से भी करेगा तो 2 की कितनी पावर में तू वहाँ पहुँच जाएगा. हाँ तो नंबर उतना पड़ेगा नहीं भाई. मैक्स अबेरी बनानी, हाँ तो ठीक तो है. ओ 1 मिनट रुको, काउंट 2 होने भी तो ज़रूरी है. एक मिनट रुको, यहाँ काउंट 2 होने भी ज़रूरी है. तो अगर किसी एलिमेंट का काउंट 2 हुआ, एक को कैसे हटाएं? एक बार ना इवन ओड सॉर्ट कर लो. क्यों भाई? ठीक है यार. चेक स्टार्ट कर रहे हैं. एक मिनट यार, नम्स काउंट कर लिया. काउंट के बाद हमारे एलिमेंट पे फिक्स मारते हैं और हर एलिमेंट से आगे जाके सर्च करते हैं. सिंपल. तो एलिमेंट अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, एलिमेंट को एलिमेंट इनटू एलिमेंट करते जाते हैं. एंड बिफोर इट रीचेस द हाई एंड. हाई एंड क्या डालें? 10⁻⁹ प्रोबेबली. हाँ ठीक है, वैसे ही वो काउंट 0 आ जाएगा. ठीक है, तो 4 इन स्टार्ट एलिमेंट डाल देते हैं. इन स्टार्ट एलिमेंट एंड दिस कैन बी एलिमेंट फर्स्ट एंड इधर इन करंट आंसर डाल देते हैं. ठीक है, हो गया. इंट आंसर इक्वल्स टू 0 कर देते हैं. वाइल कर लेते हैं.
equal to 1 or greater than 3, then we have an option to stop the chain. What? It is equal to 1 or greater than 3 because the pattern has to be odd. हाँ ये सही बोल रहा है. तो if it is greater than 0 तो आंसर इक्वल्स टू 1 करते हैं. इसको बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, साउंड्स गुड. Greater than equal to 3, sorry. बट ये एरर क्यों आ रहा है? सेट नहीं है. तुम क्या बोल रहे हो भाई? हेलो WT भाई, क्या हाल है? If it is equal to 1 or greater than 3, then we can have an option to stop the chain, so we need to update the answer. Equal to 1 or greater than 3. What does that mean? पता नहीं, I'll try. इसमें एक चीज़ है, दो. Won't we go in an infinite loop with 1? Why is it not going? मतलब इसमें 1 I think एक बार है, that's why it's not going. क्योंकि मैंने greater than 1 किया है. If there are 2 or 3 1, it will go in an infinite loop. तो 1 का केस अलग से हैंडल करना पड़ेगा. तो what can we do? If count of 1 is 2, तो आंसर इक्वल्स टू काउंट ऑफ 1 -1 कर देते हैं. else काउंट ऑफ आंसर इक्वल्स टू काउंट ऑफ 1 कर देते हैं. काउंट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए. and count of 0. अगर इवन है तो ओड बना देते हैं, अदरवाइज उसको पड़े रहने देते हैं. मैं तो बोल रहा हूँ एक को अलग से करो, चल जाएगा. नहीं भाई, नहीं चलेगा. एलिमेंट में 1 फिर भी आएगा. इरेज होता था शायद, पता नहीं. हाँ इरेज है. c2.erase अब चलेगा. वाइल में ही कंडीशन डालो. मैप कंटेन्स इंट कर दिया क्या यार? इंट कहाँ कर दिया मैंने?
फाइंड करके करो. क्यों भाई? व्हाट्स द बेनिफिट? एक मिनट में चला के देख लूँगा यार. सैम्पल टेस्ट केस मार के देख लेता हूँ. इसमें 1,1. अब ये चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला. चल तो गया. हो जाता है भाई. फाइंड क्यों करना है? चल गया भाई. एक दिन की स्ट्रीक, पैसा मिला. कूल, नाइस. सॉर्टेड. और बताओ भाई. जाने का टाइम हो गया 5 मिनट बाद. देन लेट्स लीव. नो वरीज ब्रदर. व्हाट्स न्यू स्ट्रेंजर भाई? सीन यू आफ्टर लॉन्ग. हाउ डू यू थिंक? ऐसे में तो फंस जाता हूँ. ऐसे मतलब कंस्ट्रेंट निकाल लो. बट आई डिड हियर, आई मीन ट्राई टू फाइंड द पैटर्न आई गेस एट टाइम्स. कुछ नया नहीं. ए डिडंट यू नो, लाइक you didn't know Hindi, right? You told me once. You know? Oh, I didn't know that you know. Typing test for old time's sake. Is the voice bad? Like maybe that was someone else. No, I very much remember that was you. You were asking me to speak in English, I guess. Which keyboard sounds are satisfying? Oh, the keyboard questions are back. Keychron K2. I want to buy a new one. Probably will buy something with Keychron only. Let me see what new they are. Oh, this looks nice. This looks nice. I don't want RGB backlit. I just want white. RGB is not good. Nah. Custom keyboards. This is good as well. White one. White is not there. I want a white keyboard this time. I don't want black. Show me white. Oh, this is good. White backlit. Brown keys. And it is out of stock. Nice. Get in 3 hours. They are best quoted. Epo Maker. Let me see. They do ship to India or no? Do they ship to India? I'll probably get a Keychron white. I'm pretty loyal to my keyboards.
Type racer नहीं यार, I'll just leave. Just one more test and then I'll go. One or two more then I'll go. भाई एक ढंग से स्टार्ट हो जाए यार. Not in the field. छोड़ो भाई, आज नहीं हो रहा. कॉग्निजेंट को धोखा दे रहा हूँ ब्रो. दे भाई धोखा, बड़े दिन बाद. हाँ भाई, यस. चलो guys, thanks for joining. See you probably tomorrow. We'll try to come regularly. Good night. मेरी joining है cognizant में. एक बंदा जा रहा है, एक बंदा आ रहा है. Nice. चलो, good night. Thanks. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, please do. Bye.